अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? वेरी गुड आफ्टरनून डियर व्यूअर्स, हाउ यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, हम ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप सब भी ठीक ठाक होंगे। थैंक गॉड डियर व्यूअर्स, वी आर डूइंग फाइन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसी क्या कहते हैं, रेसिपी कह सकते हैं, या वो जैसे हमारे मुल्कों में कहते हैं कि थोड़ा बहुत चस्का जैसे कहते हैं, थोड़ा बहुत शाम के टाइम या किसी भी वक्त आपको पसंद आए तो एंजॉय करने के लिए जो छोटा सा रेसिपी है वो लेके आया हूँ। है तो सब कुछ रेडीमेड ही। डियर व्यूअर्स, right now I'm going to share with you one of my own recipe which is already ready made in our country Pakistan. These things we can find in our market. We have to just mix it up and enjoy it little by little with any hot drink, green tea, coffee, milk tea, or cappuccino, you name it. So let's start. तो आइए प्यारे दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपने कोई भी बाज़ार से अच्छी पैकिंग वाली, अच्छी कंपनी वाली कोई निम्को ले लेनी है, एनी सॉल्ट डिश। ये एक पैकेट ले लें, एक ले लें, दो ले लें, जितना भी आप खाना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी, आपको कितनी पसंद है। तो मुझे तो थोड़ी क्वांटिटी में खाना था, इसलिए मैंने ये छोटा पैकेट ही लिया। सो डियर व्यूअर्स, I purchased already this one from the market, which is called in our language Nimko, and in English we can call it any saltish snack. This is saltish snack, we can call it. And the other thing for this one ingredient is fresh yogurt, ताज़ा दही प्यारे दोस्तों। And the next ingredient is, this is in our language we call it plum chutney, plum. This is paste of plum, very good ingredients in it and very good taste, natural taste. So this is plum chutney. So first step we are going to do it. तो प्यारे दोस्तों, हम इसको इस पैकिंग को कट कर लिया है, इसकी कटिंग कर दी है, और इसमें बिस्मिल्लाह करके हमने डाल दिया है। ये है। So you can see this is very small quantity. And we are going to add 1 tablespoon of this plum chutney, plum paste, which is already sweet and sour. Then we are going to add, according to requirement, according to your choice, fresh yogurt. I will add according to my requirement 3
tablespoon. Even you can add up to you 5. Anyway, I have added 5 tablespoon. And I'm going to mix it. Very simple and easy. प्यारे दोस्तों, जो निम्को है उसमें ऑलरेडी बहुत ही अच्छे स्पाइसेस अच्छी क्वांटिटी में उन्होंने मेजर करके डाले होते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट होता है उसका, निम्को का जो होता है टेस्ट, स्पाइसेस वगैरह सारे डाले होते हैं। सो इन दैट सॉल्ट इज स्नैक, in that packet they add very measured spices, dear viewers. So no need to add anything else like salt or sugar, whatever, no. Anyway, dear viewers, प्यारे दोस्तों, ये जो है रेडी है, it's ready to eat. So let's taste, and after that I will let you go. Bismillahirrahmanirrahim. MashaAllah. Wow. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. MashaAllah. Subhanallah. What a taste. Very tasty. I hope you guys also, whatever is available in the market, this is the basic ingredients I told you, you can enjoy at home, and comment below. So nice of you. तो प्यारे दोस्तों, अगर ये रेसिपी, अगर ये आइडिया अच्छा लगे तो ट्राई करके घर पे तो नीचे कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो लंबा होते जा रहा है, तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। सो नाइस ऑफ यू, जज़ाकल्लाहु खैरन, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच डियर व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाय।